Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Okay. Good evening. Hello. So today we will start new chapter from biochemistry, and that is nothing but the enzymes. So again, very important chapter for enzyme for biochemistry. Important chapter from biochemistry, that is the enzymes. I hope I am clearly audible to you. So again, we have started new chapter from biochemistry. So what we have completed from biochemistry, I would like to summarize in front of you. We have already completed biochemistry of carbohydrates, its metabolism. We have already completed biochemistry of lipids, its metabolism. Then we have already completed biochemistry of amino acids and proteins. We have also seen the vitamins chapter. We have also seen the mineral chapter. So vitamins and minerals, they are completed. So next chapter is nothing but the biochemistry of enzymes. So again, this chapter is very important for your upcoming GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist exams. Right? So a lot of times question already has been there in different exams. We will see it today, and tomorrow we'll try to complete it. So first part we'll see today, and second part tomorrow we'll finish it. Okay, biochemistry of enzymes. After that, only one chapter remains from biochemistry, and that is nothing but the nucleic acids. बायोकेमिस्ट्री में से अगर ये खत्म होता है तो एक ही चैप्टर बचता है न्यूक्लिक एसिड. बाद में बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाए. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अपन जब न्यूक्लिक एसिड चैप्टर लास्ट में लेंगे अपन, विल सी न्यूक्लिक एसिड चैप्टर एट द लास्ट, बिकॉज बिफोर द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स. So I will take your microbiology and nucleic acid, and then we'll go for that antibacterial drugs, so that you can understand in a good manner. So today we'll see the biochemistry of enzymes. First of all, what do you mean by enzymes? So you might have heard this term lot of times, enzymes. Enzymes basically क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि ये एंजाइम्स कम हो गया बॉडी में से, ये बढ़ गया, है ना. तो व्हाट आर द एंजाइम्स? वी हैव सीन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो. इन दैट आल्सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ एंजाइम्स व्हिच कैटलाइजेस द पर्टिकुलर स्टेप. तो इन जनरल देखिए, आप स्टूडेंट हो, मैं आपका एक यू कैन से गाइड हो, यू कैन से टीचर हो, यू कैन से मेंटर हो. तो अगर आप स्टूडेंट हो, मैं गाइड हो, मेंटर हो, तो आप भी अपने खुद से पढ़ सकते हो, है ना. स्टूडेंट्स ऑफन फाइंड्स ए डिफिकल्टी व्हाइल स्टडीइंग थ्रू ए बुक्स. स्टूडेंट्स, है ना, ऑलवेज फाइंड्स ए डिफिकल्टी व्हाइल स्टडीइंग इन द बुक्स. नाउ व्हाट इज टीचर? सो टीचर विल do same thing. Teacher will also learn and will simplify it and will teach the student in a simplified manner. So you can say enzymes and teachers, they are having equivalent role. Likewise that, जैसे enzymes का role होता है कि that will increase the rate of reaction without undergoing consumed in the reaction. Likewise that, जैसे स्टूडेंट को अपने रेफरेंस बुक में से पढ़ते समय कुछ डिफिकल्टी होता है, तो टीचर एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट
and it will increase your learning process, right? So likewise that enzymes are also known as a biocatalyst. So you might have seen the definitions of catalyst in the chemistry. Catalyst माने क्या होता है? Catalyst माने reaction का rate increase करने वाला agent. So agent which increases the rate of reaction is known as simply catalyst. But biocatalyst means what? So it is present in the biological system. So enzymes are known as a biocatalyst. Enzymes are called as a biocatalyst. They are a protein in nature. They are a protein in nature. So enzymes are nothing but the biocatalyst. They are a protein in nature, and they have a specific action. They have a specific, rapid and accurate action. So they will increase the rate of reaction. They will increase the velocity of enzyme catalyzed reaction without undergoing any change in the overall process. Without undergoing themselves any change in the overall process. No. So enzymes क्या है? Enzymes, you in your body you need a different metabolic reaction. So these metabolic reactions, they are only possible because of the enzymes. Because enzymes, they will speed up the reaction. They will speed up the rate of reaction. So reaction is nothing but the one substrate it converted into product, है ना? तो बॉडी में आपका एक सबस्ट्रेट होता है, उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में कौन करता है? एंजाइम्स. सो विदाउट एंजाइम्स योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस might not be possible. You are living because of the metabolism, and metabolic reactions, they are catalyzed by these biocatalysts known as enzymes. So enzymes are the organic molecule, protein in nature. They are known as a biocatalyst. They will catalyze the biological reactions. They are very specific in their action. They are rapid in their action, and they are accurate. Right? So biocatalyst that will increase the rate of reaction in the body without undergoing any change in the overall process, known as enzymes. So enzymes basically biocatalyst होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस होते हैं अपने, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, सिंथेसिस, जो भी अपन ने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में, जैसे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 phosphate by hexokinase. So hexokinase, what is that? It is a kind of enzyme that catalyzes the conversion of glucose to glucose 6 phosphate, right? So enzymes, they will increase the rate of reaction, speed up reaction in the biological system without undergoing any change in the reaction. Now very first question that can be covered, this was a question in GPAT 2022 also. इसे यहाँ पे लिखा है मैंने GPAT 2022. इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन GPAT में आ चुका है ऑलरेडी. तो व्हाट एंजाइम्स विल डू, जैसे होता है फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में, जैसे एक ये है, क्या है, सबस्ट्रेट है ना. तो सबस्ट्रेट, है ना, एंजाइम विल कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, catalyze the formation of product, will get your enzyme free. It is a overall enzyme catalyzed reaction. What is the enzyme catalyzed reaction? So a substrate is combining with the enzyme, right, and you will get a product plus your enzyme free. तो दिस इज नोन एज एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. जैसे आपका ग्लूकोज से आपको फ्रुक्टोज बनाना है, जैसे, या फिर आपके बॉडी को, जैसे आपके बॉडी में कोई एक अमीनो एसिड बनाना है, एक अमीनो एसिड है आपके बॉडी में, उससे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बनाना है. फॉर दैट यू नीड एंजाइम्स. सो व्हाट इज एंजाइम्स? दे आर द नोन एज अ बायोकैटलिस्ट. दे आर अ प्रोटीन इन नेचर. दे हैज अ स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक एक्शन, रैपिड action is there, and accurate action is there, and they will not get consumed in overall reaction. So they will increase the velocity of rate of, or they will increase the velocity of enzyme catalyzed reaction without undergoing any change in the overall process.
So how they will increase the rate of reaction? Basically enzymes will decrease, enzymes will lower, enzymes will lower the energy of activation in the enzyme catalyzed reaction, है ना. जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक आपके पास में क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यहाँ पे लिखने पर हूँ, सबस्ट्रेट है ना, U प्लस एंजाइम, S प्लस E, substrate plus enzyme. Now what is the main requisite for the reaction? तो सबसे पहले रिएक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, एंजाइम है आपके पास में और सबस्ट्रेट है, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए बाइंडिंग, देयर शुड बी ए कोलिजन, देयर शुड बी ए इंटरेक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. ये दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, जब उसमें बाइंडिंग होगा, तभी जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा. सो वेरी फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर ए रिएक्शन इज नथिंग बट द सबस्ट्रेट should combine with the enzyme. Okay? So it will combine with the enzyme. There should be a collision between substrate and enzyme, and then only you are going to get a product. Then only you are going to get a product. Your enzyme will be free. Your enzyme will be. So enzyme what will do? It will do the energy of activation. It will decrease the energy of activation. है ना. सबस्टेंट को प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलेंगे अपन, है ना. सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या आपके पास में सबस्ट्रेट होना चाहिए. सबस्ट्रेट मतलब क्या, सबस्ट्रेट मतलब आपके पास में इनिशियल रिएक्टेंट होना चाहिए, है ना. तो रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनता है ना. और वो जो प्रोडक्ट बनाने की स्पीड है वो इंक्रीज कौन करता है, कैटलिस्ट करता है ना. तो आपने देखा होगा रिएक्शंस में, केमिस्ट्री में, कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एक है ना, एक A प्लस B है ना, यू आर गेटिंग अ C. तो क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट्स तो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. नाउ हु कैटलाइजेस द रिएक्शन, द कैटलिस्ट. नाउ इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इन द बॉडी, फॉर द मेटाबॉलिज्म you need a various reactions. For that you need a biocatalyst, which is a protein in nature known as enzymes. The enzymes are the biocatalyst. They will increase the speed of reaction, rate of reaction without undergoing any change in the reaction or overall process. What they will do, they will decrease or they will lower the energy of activation required for the enzyme catalyzed reaction. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है GPAT 2022 में. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो लगता है वो कम करते हैं. तो बेसिकली एंजाइम्स लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो ये हो गया डेफिनेशन आपका एंजाइम का, राइट. नो, सो इन 1883 देयर वाज वन साइंटिस्ट नोन एज बकनर. In 1883 there was one scientist known as a Buckner. So he isolated one principle, principle known as zymase. So Buckner in 1883 isolated one compound known as zymase. So this zymase was responsible for the converting the ग्लूकोज, है ना. तो ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लूकोज से फॉर एग्जांपल G, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. Glucose is converted into alcohol by the enzyme zymase. So the Buckner in 1883 found one principle known as zymase from the maize, which is able to convert glucose into the alcohol, मतलब sugar into the alcohol. So the sugar into the alcohol is converted by zymase. So later on it was found that it was a protein in nature. So the nature of zymase was a protein. Okay. So then also
Summer first achieved the isolation of and crystallization of urease enzyme. तो जेम्स समर एक नाम साइंटिस्ट है, उन्होंने भी एक आइसोलेशन किया एंड क्रिस्टलाइजेशन किया किसका, यूरियज एंजाइम का. यूरियज एंजाइम का क्या रोल है, यू नो दैट है ना. सो यूरिया इज ब्रोकन डाउन, यूरिया इज ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया का कन्वर्जन करता है अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, by the urease, you know that. So this James Summer was first isolated the urease enzyme. So enzyme is nothing but the biocatalyst. They will increase the rate of reaction in the biological system. Very very important. So enzymes may be called in a different way. जैसे enzymes को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे zymes, है ना. zymes मतलब क्या, ये enzyme जैसे isolate, what is the source, जैसे isolation कौन किया, depending on the discovery or discoverer or the substrate. So enzymes were classified, है ना, enzymes were classified, right. So जैसे for example है ना, zymase is there, जैसे lipase is there. So ASE, most of the enzymes will have suffix. enzymes का suffix क्या होगा, ASE, yes, zymase, lipase, protease, है ना. So enzymes was called depending on the discovery, their discoverer, or depending on the substrate. जैसे होता है trypsin, chymotrypsin, है ना, chymotrypsin, then pepsin. These are the enzyme known as a proteolytic enzyme. Pepsin, trypsin, chymotrypsin, these are known as a proteolytic enzymes. They are named because of their substrate. Substrate क्या है, प्रोटीन, उसके ही बेसिस के ऊपर उसका नामकरण किया, क्या, trypsin, chymotrypsin, pepsin. They will act on a protein, right. जैसे enzymes will have a suffix ASE, है ना, ASE, है ना. जैसे lipase means what, it will break down the lipid. Protease means it will break down the protein. Nuclease, it will break down the nucleic acid. ASE, है ना, लास्ट में जो ASE आएगा, ASE, lipase, protease, nuclease, ASE. So suffix ASE is also used to denote the enzymes which break down something. So protease will break down protein, lipase will break down the lipid, glucose will break down the glucose, likewise that. So again, okay, so these enzymes, they are given the names based upon their discovery, their discoverer, or the substrate on which they are acting, right. These names are known as a trivial names. ये जो नेम है उसको बोलते हैं अपन trivial names of enzymes, trivial names, right. These names are known as a trivial names, right. So as there was no nomenclature system for the enzymes before when Union of Biochemistry, when they decided that enzymes are important and they should have a proper nomenclature, उसके बाद में यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने उसको पूरे एंजाइम का रीस्टडी किया, जो भी एग्जिस्टेंस में एंजाइम है उसका स्टडी किया, तो बाद में उन्होंने उसका नोमेनक्लेचर किया. सो यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, they have classified enzymes in a 6 category. उन्होंने 6 कैटेगरी में एंजाइम्स क्लासीफाई किए. सो बिफोर दैट एंजाइम्स वाज गिवन अ ट्रिवियल नेम, जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीएज, है ना. तो अगेन एंजाइम्स में भी आइदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, एंजाइम्स में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, है ना.
enzymes may be either intracellular or extracellular depending on their origin and site of action. Intracellular enzyme means what? So enzymes are synthesized inside the cell and they will act inside the cell only. But some enzymes will be synthesized inside the cell and they will act on outside cell. So known as extracellular enzyme. All digestive enzymes they are the nothing but the extracellular enzyme. So depending on their location also, depending on their source also. So enzymes are classified. Okay. So before so enzyme has a active part. तो एंजाइम का जो एक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं अपना होलो एंजाइम. द एक्टिव पार्ट ऑफ एंजाइम और एक्टिव एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है. सो होलो एंजाइम इज एक्टिव एंजाइम एंड होलो एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट. तो एक्टिव एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट. आप बोलेंगे इसको एक्टिव एंजाइम, होलो एंजाइम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज अपो एंजाइम विच इज नोन एज अ प्रोटीन पार्ट. पहला पार्ट जो है प्रोटीनस पार्ट होता है एंजाइम का, दैट इज अ अपो एंजाइम. सो एक्टिव एंजाइम और होलो एंजाइम is composed of apoenzyme which is a protein part and second part is a coenzyme which is a non-protein part. So apoenzyme and coenzyme. So remember apoenzyme is a protein part responsible for the catalysis. Coenzyme is a non-protein part also known as a cofactor. Also known as a cofactor. Also known as a cofactor, right? Coenzyme or cofactor. When coenzyme is tightly bound to the protein part, अगर ये कौन सा coenzyme अगर इसको tightly bound करता है ना, it is known as a prosthetic group. It is known as a prosthetic group. Okay, active enzyme is known as a holo enzyme composed of two part, protein part and non-protein part. The protein part of active enzyme is known as a apoenzyme and non-protein part is known as a coenzyme. Coenzyme. Then coenzyme is a tightly bound or covalently bound to the protein part. It is known as a prosthetic group. अगर coenzyme है ना apoenzyme को covalently bind करता है तो उसको बोलेंगे prosthetic group. So prosthetic group is a non-protein part that binds covalently with the apoenzyme. इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. The active enzyme is known as holoenzyme. That is composed of a protein part known as apoenzyme, non-protein part known as a coenzyme. So prosthetic group. The term prosthetic group is used when a non-protein part that will bind covalently with the apoenzyme. Okay? Now, coenzyme जैसे होता है, coenzyme का एग्जांपल जैसे NAD है ना, NAD, FAD, FMN, कौन देखा है NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD. Right? Some enzymes require vitamin cofactors or coenzymes, ना NAD. जो B complex vitamins है, most of the B complex vitamins, water soluble vitamins, they exert their biological role via their coenzymes. NAD, FA है ना, FA flavin adenine mononucleotide, FAM, FAD मतलब flavin adenine dinucleotide. So these are known as a coenzymes. So enzymes require certain coenzymes derived from vitamins, right? So holoenzyme is active enzyme, apoenzyme is a protein part, coenzyme is a non-protein part. When coenzyme binds apoenzyme covalently known as a prosthetic group. Okay, ये important question already आ चुका है. Now functional unit of enzyme is a holoenzyme. इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन है, functional unit of enzyme is known as a holoenzyme.
देयर आर आल्सो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम. अगर एक ही एंजाइम है उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है तो उसको बोलेंगे आइसो एंजाइम्स. आइसो एंजाइम्स. मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम आर नोन एज आइसो एंजाइम. जैसे आपका होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, है ना, फॉस्फोडाइस्ट्रेस पीडीई. PDA, phosphodiesterase. Phosphodiesterase enzyme. So there are 5 types of phosphodiesterase enzyme. So PDA, phosphodiesterase. तो लॉन्ग फॉर्म होता है phosphodiesterase. PDA. PDA मतलब क्या? Phosphodiesterase enzyme. है ना, phosphodiesterase enzyme. Phosphodiesterase enzyme, there are 5 of. They are known as isoenzymes. जैसे cyclooxygenase enzyme होता है COX. There are 3 COX, so known as the isoenzymes, है ना. Now monomeric enzymes means what? Monomeric enzymes means a enzyme made from a single polypeptide. एक ही polypeptide है, एक ही प्रोटीन है, तो monomeric enzyme. जैसे for example ribonucleases and trypsin, they are the monomeric enzyme. Oligomeric enzymes means 2 पेप्टाइड्स आते हैं, जैसे 2 to 10 पेप्टाइड्स है तो उसको बोलेंगे ओलिगोमेरिक एंजाइम्स. तो एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिमोलेज, है ना. मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है ना, इसमें मल्टीपल पेप्टाइड्स होंगे. तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, फैटी एसिड सिंथेसेस एंजाइम, दे आर नोन एज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. सो एंजाइम्स डेफिनेशन, short history. Active part of enzyme is known as a, or functional part of enzyme is known as a holoenzyme, made from a protein part known as apoenzyme, made plus non-protein part known as a coenzyme. In coenzyme covalently binds to apoenzyme known as a prosthetic group, है ना. Monomeric मतलब क्या है? Monomeric enzymes means made up of a single polypeptide, है ना. Oligomeric means 2 to 10 polypeptide. Multi enzyme complex means multiple peptide, right? Multi-enzyme complex. Now next, so as I told you before the, you can say 1930, before that enzymes was given a trivial name, है ना. trivial name मतलब क्या? जैसे trypsin, chymotrypsin, lipase, protease, nucleases. So these names are not giving you any idea. जैसे है ना, protease मतलब क्या? प्रोटीन को ब्रेक करता है, बस that's it. बट उसका, है ना, इनिबिशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, राइट. लाइक वाइज दैट. सो ट्रिवियल नेम्स वाज गिवन टू द एंजाइम्स व्हेन दे वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. सो बेस्ड अपॉन द डिस्कवरी, बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट ऑन विच दे आर एक्टिंग, बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, they were given names known as trivial names. But later on, due to confusion and due to confusion and enzyme was not giving a proper information, so Union of Biochemistry appointed some scientists and they classified the enzymes in a different types. So classes of enzyme with respect to their reaction catalyzed. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, and this classification is nothing but the classification given by Union of Biochemistry. This classification is given by Union of Biochemistry. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ UB. Union of Biochemistry has given classified the enzymes in a 6 type based upon the reaction catalyzed. उन्होंने कौन से reaction catalyze करना है, so the enzyme and their reaction catalyzed, based on that they have classified enzymes in a different class. So first class is nothing but the oxidoreductase. तो ऑक्सीडोरेडक्टेज, एज द नेम इंडिकेट, आपको नाम में ही रखा है ना, एज द नेम इंडिकेट ऑक्सीडोरेडक्टेज मतलब क्या? दीज टाइप ऑफ एंजाइम्स दे आर इन्वॉल्व इन द catalyze or they will catalyze the oxidation reaction, reduction reaction. So oxidoreductase, so these enzymes will catalyze the oxidation and reduction reaction, है ना.
तो देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, amino acid oxidase, amino acid oxidase. So these enzymes will okay, these enzymes will catalyze the oxidation reaction in the body. That's why oxidoreductase. So oxidation reaction, reduction reaction catalyzed by few enzymes known as the oxidoreductase. Okay, so they will catalyze the oxidation and reduction reaction. So what is oxidation? Gaining of electron, electron लेना. Reduction means what? Loosening of electron देना. तो यही क्वेश्चन जीपैट में 2021 में आ चुका है, नाइपर में भी आ चुका है. So the which class of enzyme will catalyze the reaction which involves the gaining and loosening of electron? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, and that is nothing but the oxidoreductase. You can go and check the GPAT 21 paper. रिएक्शन कैटलाइज्ड इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन. बॉडी में जो भी जितने भी ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन है, दे आर कैटलाइज्ड बाय ए कैटेगरी ऑफ एंजाइम नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज. सेकेंड टाइप ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम, यहाँ पे दूसरा टाइप क्या है कि ट्रांसफरेज. तो आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, क्या रखा है भाई, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफरेज. मतलब क्या, इनका काम है कि ट्रांसफर करना. भाई किसको ट्रांसफर करना? ग्रुप को ट्रांसफर करना. तो ट्रांसफरेज मीन्स व्हाट? दे इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर. ट्रांसफरेज एंजाइम दे विल ट्रांसफर वन ग्रुप टू अनदर, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल दिया है हेक्सोकाइनेज. कौन सा काइनेज? हेक्सोकाइनेज. तो इसका क्या काम है भाई? वी हैव ऑलरेडी सीन द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट by the enzyme hexokinase. Now hexokinase it is a subtype of transferase enzyme. Subtype क्या है कि hexokinase. Kinase enzyme जो है that will transfer a phosphate group. That will transfer a phosphate group. So hexokinase will transfer phosphate group to the glucose. So glucose is converted into glucose 6 phosphate by the hexokinase. है ना. से और एक एग्जांपल है transaminase. Transamination reaction we have already seen in the amino acid chapter. So transaminase means what? It will transfer amino group. Transmethylase, transfer of methyl group. Phosphorylase, transfer of phosphate group. So transferases means they are involved in the transfer of one group to another. Okay. Next होता है third category hydrolase. Third category is hydrolase. So they are involved in the hydrolysis or bond breakdown of your compound. Hydrolysis they are involved in the breakdown of bonds. तो इसमें भी दो टाइप के एंजाइम होते हैं. So some enzymes will hydrolyze by adding the water molecule. Some enzymes will hydrolyze or break down the molecule without adding the water molecule. So hydrolysis, for example, lipase will break down the lipids. Choline esterase will break down the choline and acetylcholine को break down करेगा. Alkaline phosphatase, then pepsin is a kind of hydrolysis enzyme. Urease will break down the urea. They are known as a hydrolysis. Okay. Next enzyme category, fourth type is classified as a liases. So they are also a type of hydrolysis. मतलब ये hydrolyze करता है, but hydrolysis they will utilize a water molecule, है ना. They will add a water and they will break down the bond. तो water add करेंगे, ammonia add करेंगे, है ना, ऐसा कुछ करके so hydrolyze करेंगे, right. But liases they will not add any water molecule and they will not, है ना, they will break down the bond without water molecule. So example is aldolase, humarase, histidase. aldolase मतलब क्या, इस शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, है ना. humarase मतलब क्या, फ्यूरिक एसिड. histidase मतलब क्या, histidine को ब्रेक डाउन करेगा. So they are involved in the additional elimination reaction. Addition of water molecule, ammonia, carboxide,
reaction. Fifth category of your enzyme is nothing but the isomerase. तो नाम में रखा है ना आइसोमरेज, तो क्या करेगा आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ना. ग्लूकोज इज आइसोमरेज है ना, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू मैनोज, मैनो है ना आइसोमरेज एंजाइम है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप होता है स्प्लिटिंग फेज, तो दैट इज अ ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सास्टिन फॉस्फेट. उसमें जो है fructose 1,6 phosphate is broken down into 2 molecules, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyastone phosphate, but they are interconverted by isomerase enzyme. So isomerase enzymes, they will convert, they will have isomerization reaction, they will catalyze the isomerization reaction. Remember, all other class of enzymes, they are a specific, they are a reactant specific, they are a stereo specific, they are a product specific, but isomerase enzyme, they are not a stereo specific. Isomerase enzymes are not a stereo specific, stereo specific नहीं होते. For example, phosphohexose isomerase, glucose isomerase, etc., etc. They will catalyze the isomerization reaction. Sixth class of enzyme as per the union of biochemistry, ligases. ligases अब अगेन इसके नाम में लिखा है ligase, मतलब टू ligate, मतलब टू join, to ligate means to join. So what are they? They are involved in the condensation reaction, they are involved in the joining, they are involved in the condensation reaction, and they utilize the ATP, they are ATP dependent. तो है ना, जैसे सिंथेटाइज टाइप के एंजाइम जो होते हैं, दे आर लाइगेजेस. तो ग्लूटामाइन सिंथेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, they are the ligases. So as per the union of biochemistry, enzymes are classified as in a 6 type, which will give you about the information of enzyme catalyzed reaction. तो पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज. Oxidoreductase, they catalyze the oxidation reduction reaction. Second is transferase, that will transfer a group. Hydrolase, that will hydrolyze or break down the bond. Liases, so same thing. Isomerase will catalyze the isomerization reaction, and ligases will catalyze the formation condensation reaction. You can remember this, है ना, जैसे इनिशियल वर्ड ले लो O T H L I and L ना. तो OTHLIL मतलब एक टर्म होता है ओथली ना. OTH मतलब ओथ, मतलब क्या होता है शपथ, ओथ ली लिल, ओथ लिल, oath lid. You can remember these names by this trick. Okay, so very important question already आ चुका है इसके ऊपर. Right, next part we'll see. Now what enzymes will do, what enzymes will do. Suppose if you plot a energy on a y-axis and time on a x-axis, and this red dot is a reactant, it is a reactant. You can say reactant in the biological system is known as a substrate. इसको अपन substrate बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपन product. Right? Energy, time. Okay. Now, right? This is nothing but the energy level of substrate. Energy level of substrate. This. Right? Now, to convert a substrate into product, normally it takes, normally it takes this much energy. Then you get a product. Reaction kinetic without enzyme. Without enzyme, यहाँ पे energy आपको activation energy कितना लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है. The activation energy is more in case of conversion of substrate into product without enzyme.
तो अगर आपको प्रोडक्ट का कन्वर्जन करना है ना, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करना है प्रोडक्ट में विदाउट एंजाइम, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है. नाउ in presence of enzyme, in presence of enzyme the activation energy is lowered, activation energy is lowered to reaction with the enzyme. और वही क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में. what enzymes does, so enzyme decreases the activation of energy and convert the substrate into product. So basically it increases the speed of reaction, and C2B is nothing but the decrease in the activation, decrease in the activation of energy. यहाँ पे लिखा है red circle, that is a substrate, black circle product. C is nothing but the energy in absence of enzyme, and C2B is the activation energy in presence of enzyme. B2A is nothing but the lowering of energy. B2A is nothing but lowering of energy by enzyme. Okay. Now factors affecting on the activity of enzyme. तो in an enzyme catalyzed reaction क्या क्या फैक्टर्स होंगे आपके यहाँ पे, तो which factors will affect the enzyme catalyzed reaction, है ना. जैसे पहले यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ, जैसे concentration of enzyme, concentration of substrate, concentration of enzyme, concentration of substrate, concentration of enzyme, concentration of substrate, okay, then concentration of product. तीन फैक्टर हो गए, concentration of enzyme, concentration of substrate, concentration of product, then temperature, then pH, yeah. These are the some factors, है ना, कि concentration of enzyme, concentration of substrate, concentration of product, concentration of product, then temperature, pH, then time. These are the few factors which affect the enzyme activity. So factors affecting on the factors affecting the enzyme activity, factors which affect the enzyme activity. कौन से फैक्टर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला है आपको, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में, है ना, उसके बाद में पीएच, उसके बाद में टेम्परेचर, है ना. तो दिस टाइम, these kind of factors which affect the enzyme catalyzed reaction. So factors affecting the enzyme catalyzed reaction. पहला है आपका concentration of enzyme. So as the concentration of enzyme is increased, the rate of reaction or velocity of reaction, conversion of substrate to product, rate of conversion of substrate to product is increased proportionally. जैसे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे आप, तो वैसे प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार होता है. सो प्रोपोर्शनली इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट है आपका, उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो अगेन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विद इन अ लिमिटेड रेंज. जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन बढ़ेगा, बट अप टू ए लिमिटेड रेंज ऑफ ए सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है. थर्ड होता है, इसमें आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ factors affecting on the enzyme reaction, enzyme catalyzed reaction, one of the factor is a substrate concentration. तो उसमें आता है आपको फिर order of reaction, है ना. So order of reaction, तो just consider over here, यहाँ पे consider करो आप, there is one enzyme catalyzed reaction. One enzyme, consider one enzyme catalyzed reaction.
So what is enzyme catalyzed reaction in this? So mathematically it can be said, से यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, enzyme catalyzed reaction मतलब है enzyme plus substrate, you will get an enzyme substrate complex. So enzyme substrate complex formation, and which later on eventually converted into product, and you will get your enzyme free. The enzyme catalyzed reaction overall. Now in this case, the forward reaction constant you take for first step K1. Now this is the enzyme substrate complex is a dissociable, so backward reaction can be possible. So backward rate constant is K2. Finally, when enzyme substrate complex is converted into product, so at that time K3 is a reaction constant and a rate constant, reaction rate constant K1, K2, K3. Right? And now, order of reaction, first order with respect to substrate. Velocity of reaction is almost proportional to the substrate concentration. First order मतलब क्या है? If the rate of reaction is dependent on the substrate concentration, known as the first order reaction. If the substrate concentration is less than Km, तो पहले Km क्या है वो देखते हैं. So Km is nothing but the Briggs or Haldane constant, also known as the Michaelis Menten constant. Km is known as the Michaelis Menten constant or Briggs Haldane constant, given by formula Km is equal to K2 K3 K1. मतलब देखो यहाँ पे है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है K1, मतलब है ना, बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट अपन ले K2, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक K3. सो है ना, इतने सारे कांस्टेंट है तो एक ही कांस्टेंट चाहिए, तो एक कांस्टेंट क्या है फिर Km, which is known as a Briggs and Haldane's constant, also known as a Michaelis Menten constant. Km is equal to K2 plus K3 divided by K1. Right? Now, if the substrate concentration is less than Km, अगर substrate का concentration Km से कम है, so at that time it follows the first order reaction. If the substrate is much greater than Km, the reaction is independent of the substrate concentration and can be called as zero order. Zero order, है ना. तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है Km से, है ना, Km मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, उससे ज़्यादा है तो जीरो ऑर्डर, और उससे कम है तो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, डेरिवेशन में जाते नहीं याद, सो डेरिवेशन डोंट गो इन अ डेरिवेशन, इट इज गिवन इन द बुक्स बट इट इज आल्सो वेरी सिंपल. माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, so it is used to calculate the velocity of reaction. So enzyme catalyzed reaction का velocity क्या है, rate क्या है, so it is nothing but the velocity is equal to Vmax into substrate concentration divided by Km plus S. You can see the equation over here again. Velocity of enzyme catalyzed reaction is equal to Vmax. Vmax क्या है, maximum velocity enzyme catalyzed reaction into substrate concentration divided by Km into Km plus substrate concentration. Okay? Now V is the measured velocity, Vmax is the maximum velocity, S is the substrate concentration, Km is nothing but the Michaelis Menten constant, also known as the Briggs and Haldane constant, है ना. तो क्या होता है Km वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज Km? Km is nothing but the Michaelis or Michaelis Menten constant or Briggs and Haldane's constant. Now it is defined as the substrate concentration to produce a half of the maximum velocity. Substrate concentration to produce a half of the maximum velocity. मतलब Vmax divided by 2. So is nothing but the substrate constant, the concentration of substrate required to produce 1 by 2 Vmax or half Vmax is nothing but the Km or Michaelis Menten constant. You can see over here
if you plot a Vmax versus substrate concentration, तो substrate concentration आपने दिया है x axis पे और velocity of reaction और rate of reaction है आपका y axis पे. So you will get a hyperbolic curve. तो Vmax is here, maximum velocity कहाँ पे, यहाँ पे maximum product rate convert हुआ है, maximum substrate is converted into product at this known as a Vmax. So maximum velocity at which product is converted, substrate is converted to product known as a Vmax, right? Now Km is क्या, Michaelis Menten है ना, Michaelis Menten equation और Briggs and Haldane equation, sorry Briggs and Haldane constant Km मतलब क्या है, Michaelis Menten constant और Briggs and Haldane constant. What is that? It is the concentration of substrate required to produce a half of the maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction. तो यहाँ पे देखो half max 1/2 Vmax. Now Km value is a constant and is a characteristic feature of given enzyme. Km value constant होता है हर एक एंजाइम के लिए, तो उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. फॉर एग्जांपल 7 नंबर का ग्लव आपने लिया है, तो उसमें आपको 7 नंबर का ग्लव आपके हाथ में फिट आता है, ग्लव्स है ना. तो आपका दोस्त थोड़ा सा हाइट में साइज में बड़ा है, उसको 9 नंबर का ग्लव लगता है, तो आपका ग्लव आपके हाथ में फिट आएगा, उसके हाथ में नहीं आएगा. तो Km वैल्यू इज अ कांस्टेंट फॉर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन एंजाइम. एट अ लो Km वैल्यू, अगर Km वैल्यू कम है इन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, देयर इज अ लो Km दैट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. मतलब इंटरेक्शन एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में ज्यादा है. कब? व्हेन Km वैल्यू इज लेस. A low Km value will show you strong interaction between the enzyme and substrate, whereas a high Km value will reflect a weak affinity, weak interaction between them. Most of the enzyme will have Km value in a range of 10 raised to -5 to 10 raised to -2. Most of the enzyme के लिए Km value इतना होता है, 10 raised to -5 to 10 raised to -2. Km is not dependent on the concentration of enzyme. Km value does not depend on the concentration of enzyme. ठीक है. Now the Michaelis Menten equation does not gives the more information. Say for example information about the inhibition, competitive, non-competitive. So that's why by taking a reciprocal, जो आपका पहला इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो यू विल गेट अ लाइन वियर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ये जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू Vmax इंटू S डिवाइडेड बाय Km प्लस S. तो इसका रेसिप्रोकल लेना है. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 1/V है ना, 1/V इज इक्वल टू ऐसा, उसका रेसिप्रोकल लेना है. तो विल टेक अ रेसिप्रोकल. तो बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ Michaelis Menten equation, the plot of reciprocal of velocity, मतलब 1/V, देखो यहाँ पे 1/V max versus the concentration, substrate concentration, मतलब 1/S. So reciprocal of velocity versus reciprocal of substrate concentration will give you one graph. Which is a straight line. But in case of Michaelis Menten equation, वहाँ पे hyperbola आया था. So a plot of reciprocal of maximum velocity versus reciprocal of substrate concentration will give you this straight line, which is known as a Lineweaver and Lineweaver-Burke double reciprocal plot. Lineweaver-Burke double reciprocal, right? So with the slope known as a Km divided by Vmax, Km divided by Vmax will give you the slope of this curve, and y-intercept is nothing but the 1/Vmax. देखो यहाँ आप y-intercept कहाँ पे,
1/Vmax एंड स्लोप क्या है इसका, स्लोप है Km divided by Vmax, Km divided by Vmax. The double reciprocal plot is useful in the understanding effect of various inhibitions. Now effect of temperature on the enzyme reaction, so enzyme catalyzed reaction. Temperature का effect क्या है? So as the temperature is increased, the velocity of reaction is also increased. Now rate of reaction is increased as there is increase in temperature up to maximum, then the rate will decrease. मतलब initially जो conversion rate है substrate to product, जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे वैसा वैसा बढ़ता है, but at a one point at a maximum temperature वहाँ पे maximum रहेगा, उसके बाद में rate क्या होता है, कम होता है. Initially rate of enzyme catalyzed reaction is increased as there is increase in the temperature up to the optimum and then it goes down. Yes. You will get a bell-shaped curve. You will get a bell-shaped curve, है ना. The temperature coefficient क्या होता है? Temperature coefficient or Q10 of the enzyme. Temperature coefficient of the enzyme is nothing but the increase in the velocity of enzyme when temperature is increased by 10 degrees Celsius. So temperature coefficient of enzyme कैसे ये पर define करते हैं? So it is the increase in the velocity of enzyme catalyzed reaction with the increase the temperature by 10 degree. So most of the enzymes will have Q10 in a range of 2 to 40 degrees Celsius. तो मतलब maximum temperature जो है, मतलब जो activation energy लगता है, तो enzyme catalyzed reaction में activation energy कौन देता है? That is the temperature. आपके बॉडी में भी टेम्परेचर ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 है ना. दैट्स व्हाई मैक्सिमम है ना, दैट्स व्हाई मैक्सिमम एंजाइम्स विल एक्ट ऑन दिस रेंज 2 to 40 डिग्री. तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेंगे वो टेम्परेचर से, राइट. तो दैट्स व्हाई तो जब आप ठंडी में या बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कम होता है. व्हेन यू आर इन अ cold extreme condition, so what happens, your metabolism of your body is decreased ना. जैसे आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हो तो आप ब्रेड ला के रखते हो फ्रिज में, क्यों? क्योंकि खराब ना हो जाए. लेकिन फ्रिज में क्यों खराब नहीं होते जल्दी? रीजन बिहाइंड दैट इज नथिंग बट द microbial enzymes also need a temperature, the optimum temperature to act as a catalyst. So in the freezer the temperature is decreased, so microorganism उनके जो enzymes है they will not get a activation energy, and that's why metabolism will be low. And so temperature coefficient or Q10 is nothing but the increase in the velocity increase in the velocity of temperature as there is increase in the temperature by 10 degree. Most of the enzymes will have Q10 in between. Q10 उनका वैल्यू क्या रहेगा, 2 to 40. Some enzymes has a high, जैसे for example alkaline phosphatase है ना, then there is a tag DNA polymerase which has a activation energy 70 degree. Likewise that कुछ एंजाइम का ज़्यादा भी एक्सेप्शन भी होता है उसका. So again effect of pH. So when pH is increased, the rate of reaction or velocity of enzyme catalyzed reaction will increase at optimum and then it will decrease. Again a bell shaped curve. The pH, है ना, most of the enzymes will have optimum pH at which they will show the highest velocity. A bell shaped curve is obtained. Each enzymes will have optimum pH at which velocity will be a maximum. Below and above that pH the activity will be less. Now effect of product concentration. Effect of product concentration. Increase in the product concentration will decrease the reaction velocity. तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है. तो इंक्रीज इन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विल इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, याद रखना है. So it is a inversely proportional.
है ना, जो इंक्रीज करता है वो डायरेक्टली। सम एंजाइम्स रिक्वायर सर्टन इनऑर्गेनिक मेटालिक कैटाइंस, जैसे आपने देखा होगा एंजाइम के लिए एक्टिवेशन के लिए क्या लगता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम एक्सेट्रा. Some require one enzyme is there which require Cl minus also for their optimum activity. Okay, so known as a cofactor or activators. इनको ही बोलते हैं cofactors और activators, metallic cation activators. Metallozyme मतलब क्या है? So metallozyme is enzyme that will hold metals covalently with their, है ना. So some enzymes will hold the metal covalently, known as the metallozymes. They are not readily exchanged or dialyzed. Now, enzyme inhibition क्या है? Enzyme inhibition, there are two types of enzyme inhibition. So, enzyme inhibition means what? Decrease in the catalytic activity of enzyme is known as the enzyme inhibition. एंजाइम का कैटालिसिस का काम रोकने वाला क्या है? इनहिबिटर है. तो एंजाइम इनहिबिटर मतलब क्या है? Decrease in the catalytic activity of enzyme is known as enzyme inhibitor. There are two types of inhibition: reversible inhibition and irreversible inhibition. There are also another type known as allosteric inhibition. So reversible inhibition मतलब क्या है? The inhibitor will bind non-covalently. The inhibitor will bind non-covalently with the enzyme, and enzyme inhibition will be reversed upon increasing the substrate concentration, है ना. जैसे ये है आपका एंजाइम, ये है आपका सबस्ट्रेट, और ये है आपका प्रोडक्ट प्लस एंजाइम. तो है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये है आपका इनहिबिटर. रिवर्सिबल इनहिबिशन, the inhibitor binds non-covalently with the enzyme and decreases the rate of reaction. Okay, there are two types of reversible inhibition. First one is a competitive inhibition, and second one is a non-competitive inhibition. तो inhibition reversible में दो टाइप का है. reversible enzyme inhibition has a two type. The first one is a competitive inhibition. So in this inhibitor has a close structure, close resemblance to the substrate. मतलब क्या, इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट जो है और जो इनहिबिटर है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. दैट्स व्हाई दे विल हैव कंपटीशन फॉर द एंजाइम्स. सो याद रखना है, द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स टू द सबस्ट्रेट, मींस सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर विल हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी. दोनों में क्या है? स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है ना. Inhibitor and substrate have similarity. That's why they will compete with the each other for the enzyme, and it is regarded as a substrate analog. In the competitive inhibition, the inhibitor is a substrate analog. Okay. Now, in competitive inhibition, आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जीपैट में आ चुका है, नाइपर में वगैरह. तो इन केस ऑफ competitive inhibition, what changes takes place in the rate of reaction? So in competitive inhibition, Km value Michaelis Menten constant जो होता है, Km value will increase. In a competitive inhibition, Km value increases, whereas the Vmax जो maximum velocity that remains unchanged. In a competitive inhibition, Km value increases, Vmax remains unchanged. एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज. सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, दिस इज द एंजाइम. Succinate dehydrogenase is a classical enzyme, classical example of this competitive inhibition. The succinate dehydrogenase is inhibited by succinic acid itself. Succinate dehydrogenase के लिए substrate कौन सा है? Succinic acid. Now it is inhibited by malonic acid, glutaric acid and oxalic acid. ये तीनों
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करते हैं. Malonic acid, glutaric acid, oxalic acid, they have structural similarity with the succinic acid. They act as a competitive inhibitor. Second example is ethanol. Ethanol can be used in case of methanol poisoning. Ethanol और methanol का structure क्या है? Similar है. जैसे CH3CH2 CH3 है ना, CH2OH is ethanol. CH3OH is methanol. In case of methanol poisoning, ethanol can be given which will compete with the methanol for the alcohol dehydrogenase and will decrease the symptoms of poisoning. Competitive inhibition. Competitive inhibitor के examples. Inhibitions are of different type. तो enzyme inhibition में एक आता है reversible inhibition, एक आता है irreversible inhibition, एक आता है allosteric inhibition. रिवर्सिबल इनहिबिटर में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये याद रखना है आपको, है ना, नॉन कोवेलेंट. तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन, इनहिबिटर विल बाइंड नॉन कोवेलेंटली विद एंजाइम. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट मींस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इन दिस केस इनहिबिटर विल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर विद द सबस्ट्रेट and will act as a substrate analog. Then very important thing to remember, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km वैल्यू इंक्रीजेस एंड Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड. Vmax इज अ कांस्टेंट. Km वैल्यू बढ़ जाता है इसमें. Km वैल्यू इज इंक्रीज्ड, Vmax इज अ कांस्टेंट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. राइट, एग्जांपल देखा है. नाउ नेक्स्ट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव inhibition. The inhibitor will bind the enzyme to the other site other than the active site on an enzyme surface. मान लीजिए आपके एक एंजाइम है, एंजाइम है आपका, तो इसमें ये दिस इज नोन एज एक्टिव साइट. एक्टिव साइट क्या होता है? The site at which catalysis taking place or the site at which substrate will bind, the site at which particular amino acids are present, known as the active site. Non competitive inhibition में क्या है कि an inhibitor will bind to the enzyme other than active site. Competitive inhibition में क्या होता है? Competitive inhibition में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और एक बात है. से फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव साइट, है ना, और ये क्या है? इनहिबिटर है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल बाइंड एट एक्टिव साइट. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल बाइंड अदर साइट, इट इज एक्टिव साइट. यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करेगा. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल बाइंड टू द अदर साइट देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. दिस बाइंडिंग impairs द एंजाइम फंक्शन. ये बाइंडिंग अदर साइड को करता है बट एंजाइम फंक्शन का इम्पेयरमेंट करता है, डिक्रीजेस द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. Inhibitor does not have any structural similarity or resemblance to the substrate. जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसका कोई भी स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं होता है आपके सबस्ट्रेट के साथ, बट सबस्ट्रेट है ना, but has a strong affinity. But non-competitive inhibitor also has a strong affinity to bind at a second site of enzyme. Competitive inhibitor क्या करेगा? एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा? अदर साइट को बाइंड करेगा. Now this type of inhibition, in case of non-competitive inhibition, Km वैल्यू इज अनचेंज्ड. Km वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. Km वैल्यू इज अनचेंज्ड बट Vmax इज लोअर. तो Vmax क्या है? कम हो गया. So in case of competitive inhibition, Km value is increased and Vmax remain unchanged.
In case of non-competitive inhibition, Km value is unchanged, Vmax is lowered. इसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Some heavy metals like silver and lead, mercury, they can bind non-competitively with the enzyme by binding with the cysteine and sulfhydryl groups of enzyme. They are non-competitive. Now, irreversible type of enzyme inhibition. The inhibitor binds covalently with the enzyme. अभी देखो रिवर्सिबल में क्या है कि नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है. उसमें 2 टाइप है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन. और इरिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में तो इनहिबिटर विल बाइंड टू एंजाइम कॉम्पिटेटिवली and inactivate the enzyme. It is irreversible. Inhibitor usually are toxic substances that cause poisoning to the enzyme. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका DFP, dimethyl fluorophosphate. It was a nerve gas. Developed by Germans for chemical warfare. Germany, Hitler, he developed a DFP, dimethyl fluorophosphate, for the chemical warfare, which binds with the cholinesterase enzyme irreversibly. ये cholinesterase enzyme को irreversibly bind करता है, and we have already seen the organophosphate poisoning in the your cholinergic drugs. So DFP, malathion, parathion, they binds covalently with the acetylcholinesterase and irreversibly inhibit the acetylcholinesterase. Right? So irreversible inhibition. Example है इसका pyruvate acetate. Pyruvate acetate is irreversible inhibitor of enzyme like pepin, glyceraldehyde 3-phosphate, dehydrogenase. Okay, this pyruvate acetate by combining with the sulfhydryl group inactivate the enzyme. क्योंकि enzyme क्या है? Enzyme is nothing but the protein. प्रोटीन में क्या होगा, अमीनो एसिड्स, बट एक्टिव साइड जो है एट दैट साइड देयर इज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, तो जैसे सल्फाइड्रिल ना, एलानिन ना, तो वहाँ पे सल्फाइड्रिल ग्रुप्स को बाइंड करके पायरुवेट एसिटेट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम लाइक पेपिन, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजनेज, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम. Diisopropyl fluorophosphate (DFP), the nerve gas developed by Germany in the Second World War that inhibit the enzyme serine proteases and acetylcholinesterase irreversibly. The serine proteases मतलब क्या है? Serine protease मतलब क्या है? This is a pepin or this is a trypsin, chymotrypsin. मतलब those enzymes which has a serine amino acid in the active site. जो भी एक्टिव साइड है उसमें सेरीन अमीनो एसिड है तो उसको बोलते हैं सेरीन प्रोटीजेस. ओके, डाइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP आल्सो इरिवर्सिबली इनहिबिट द एसिटिलकोलिनेस्टरेज. साइनाइड जो होता है, साइनाइड इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीथिंग के लिए. ओके, so that is inhibited by cyanide. Cyanide is irreversible inhibitor of cytochrome oxidase. ठीक है. Disulfiram is a drug. Disulfiram is a drug known as anti-abuse. इसको अपन anti-abuse बोलते हैं. Now we have already seen it is a anti-abuse. It is a drug used in the withdrawal of alcohol or alcohol of addiction. अल्कोहल एडिक्शन में, अल्कोहल डिपेंडेंस में ये ड्रग यूज किया जाता है. डाइसल्फिरम इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन. आपने ऑलरेडी देखा है अल्कोहल चैप्टर में. दिस आल्सो एग्जांपल ऑफ
एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। देखो यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या होता है कि देखो, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर and inhibition in a substrate saturation curve in presence of and in absence of competitive inhibitor, है ना। तो नॉर्मली देखो यहाँ से रिएक्शन रेट बढ़ेगा यहाँ पे, है ना, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो क्या होगा, रिएक्शन रेट कम होगा। यू कैन सी Vmax विच डिक्रीज्ड, है ना, यहाँ पे Km वैल्यू है, Km वैल्यू फॉर absence of inhibitor and new Km value in presence of competitive inhibitor. So in competitive inhibition, Km value is increased and Vmax is remaining constant or unchanged. Non-competitive inhibitor में क्या होता है, non-competitive inhibition, so there is no structural similarity between the with inhibitor without inhibitor, मतलब normally enzyme है और inhibitor मतलब with competitive नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो Km वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, बट Vmax देखो, Vmax इज लो। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ एक होता है सुसाइड इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिटर में इनहिबिशन में एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन, इसमें कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, अपन ने देखा है। तीसरा होता है सुसाइड इनहिबिशन, चौथा होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन मतलब क्या, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड इनहिबिशन which is also irreversible inhibition. In this case, original inhibitor, जो inhibitor है original, is converted into more potent form by the same enzyme that thought to be inhibited. मतलब एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने वाला इनहिबिटर है, वो एंजाइम वो इनहिबिटर को ऐसे अलग फॉर्म में बनाएगा कि वो उससे भी ज्यादा पोटेंट इनहिबिटर बनेगा। दैट इज नोन एज सुसाइड इनहिबिशन। एग्जांपल ऑफ दिस सुसाइड इनहिबिशन इज नथिंग बट द एलोपिरिनॉल। एग्जांपल है इसका एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल इनहिबिट द एंजाइम नोन एज xanthine oxidase। xanthine oxidase एंजाइम जो है, दिस इज द एंजाइम xanthine oxidase, this one is a inhibitor, ये allopurinol। तो allopurinol is used in the treatment of gout। तो xanthine oxidase ये एंजाइम है, क्या करता है कि प्यूरिन्स को pyrimidines को मेटाबोलाइज करके यूरिक एसिड बनाता है। लास्ट में यूरिक एसिड बन गया तो गाउट होता है, और गाउट में ये ड्रग यूज करता है allopurinol। इट इज अ xanthine oxidase inhibitor। तो inhibition of xanthine oxidase enzyme by allopurinol is a kind of suicide inhibition, because allopurinol when combined with the xanthine oxidase inhibitor, so allopurinol is converted into alloxanthine, which is a more potent inhibitor of xanthine oxidase. So in this manner 5-fluorouracil gets converted into fluorodeoxyuridylate। ये एंटी कैंसर ड्रग है 5-fluorouracil get converted into fluorodeoxyuridylate which inhibit the enzyme thymidylate synthase। उन्हें देखा है। So it is a kind of again suicide inhibitor, suicide inhibition। और एक इनहिबिशन होता है आपका, और एक इनहिबिशन होता है उसका है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। विल सी इट, डोंट वरी। नेक्स्ट होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर मतलब क्या है, तो एलोस्टेरिक inhibitors, they are the inhibitor which is a part of enzyme regulation, it's a part of enzyme regulation। now allosteric effector, there are two types, allosteric effector और modulator। allosteric effector और modulator, क्योंकि एंजाइम जो है ना, एंजाइम
जैसा है ये है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट. There is another site, and there is another site to which allosteric effector or allosteric modulator or allosteric inhibitors they binds. Allosteric site. Allo मतलब ये allosteric मतलब allo is a term, allo is the some language ना, जैसे Greek word में allo मतलब other than active site. Right? So they will modify the actions by binding to a allosteric site and regulate the enzyme activity known as allosteric inhibitor. Now enzyme specificity, बाकी the theories we'll see tomorrow, activity वगैरह we'll see the remaining part tomorrow. So this was the first part of enzyme, remaining part we'll see tomorrow at the same time.